So very good evening everyone, welcome back to channel again, and here we are coming with another opportunity. So इस वीडियो में हम another recruitment देखेंगे regarding the professor, assistant professor and associate professor. Okay, so without any further delay, let's move to the top of this advertisement. Let us see. So ये एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये कॉलेज है जो एफिलिएटेड कॉलेज है, और ये उसका एड्रेस रहा। और ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है 14 मई को 2024 को। ओके, सो उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया फॉर द इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, ऑन दिस इज द ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड। ओके, and they will pay you 44,100. okay, so if you are appointed as a permanent, then your salary will be 57,700, but this is contract based, so they provide you 44,100, and I think that fixed period of time. Okay, so let us move. First of all, in a farm machinery and power engineering. Okay, so you have a BTech in agriculture engineering, MTech in farm power or machinery or equivalent, and you have must qualified your net. And if you have a PhD, then it's very good, but if you don't have, then you have must days are required. And if you are not qualified net, then you have must completed your PhD degree. So in case of if you are a completed your PhD, then you will be exempt from the net. Okay, so there is 4 vacancies in this. Let's move and let us see agriculture processing and food engineering. So BTech in agriculture, MTech in processing and food and engineering, and net the same qualification, and the same will be same process will be repeat. If you have PhD, then is no need of any kind of net or SLET. Okay, and there is 5 seats. Okay, so third one, soil and conversion engineering. Okay, irrigation and drainage engineering. Okay, so you have BTech in agriculture engineering, MTech soil and water engineering. Another they have mentioned, and net. So if you don't have net, then you have must PhD. So in the fourth one, electrical engineering, and you have BTech in electrical, MTech in power and energy, microelectronics and control or equivalent, and there is no need of any net. Okay, so and if you have completed your PhD, then it's a very great. Their qualification are mandatory. So there is one post. And mechanical engineering, so there is BTech in mechanical, MTech in thermal engineering or engineering design, production engineering or equivalent, and there is 3 seats. Okay, civil engineering, so there is a BTech in civil and MTech in structural, geometrical, environmental, water resource and hydro informatics, and there is 1 seat. Food and technology, a BTech in food technology, MTech in processing and food, and there is 2 seats. Okay, food and science and technology, MSc in food science and technology, MSc. Okay, so you have MSc and you have qualified net, then very eligible. There is 1 seat for this. Okay, and 9th, microbiology, essential qualification is MSc microbiology and you have qualified net, and there is 1 post. And agronomy, so there is you have a BSc in agriculture and MSc and you have qualified net, then you are eligible. There is also 1 seat. And mathematics, there is a BSc is essential and MSc and net, and there is also 1 seat. Statistics, BSc MSc in mathematics, net in 1 seat. Physics, BSc MSc net, and 1 seat again. Same as the chemistry, the same qualification, BSc MSc chemistry and net. And physical education, MPED, actually I don't know, master of physical education, I think so. Okay, so if you completed that and you have qualified net, then there is 1 post for you. And 16th, assistant professor biochemistry. Okay, so you have a MSc in biochemistry and you have qualified net, and in desirable if you have PhD in that, then it's also great, and there is also 1 vacancy for that. So, and 13th, last one, assistant research engineer and BTech in agriculture engineering, MTech in processing and food engineering, and these all equivalent, and there is 1 post in also that. Okay, so you have a master's with 55%. Okay, so and you have qualified net or equivalent test,
they have mentioned, but in that, in some cases, in some department like electrical and mechanical, they have no need of net. Okay, but most of our requirements are net. So check as your preference. You now apply for the which post they have a essential qualification net is not, yes or not, you have to check that first. Okay, सो आपको यहाँ पर हो गया। तो टर्म कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 44,100 ये आपको देंगे। और यहाँ पर आपको एक मंथ में एक दिन की कॉजियल लीव मिल सकती है और मैक्सिमम 10 मिल सकता है साल में, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पर आपको कैंडिडेट को प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन डेट ऑफ एप्लीकेशन के भीतर ही होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर आपकी एज मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस डेट से जोड़ी जाएगी 1/1/2024 से, और वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड सो after the selection, if you are appointed, they have mentioned if you are appointed, then you have to just execute it like the candidate a stamp paper with 200. Actually they have a requirement, they are asking for a agreement. Okay, so you have to just put down on 2,000 stamp paper. Okay, so यहाँ पर हो गया हम लोग का, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ बस। सो आपको अप्लाई कैसे करना है, देयर इज़ वो फॉर्मेट, लेट मी शो यू। यहाँ पर आप स्लाइड डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एनेक्सचर 1 का एक फॉर्मेट मिलेगा, ये फॉर्मेट। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट दे दूँगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करिए। इस फॉर्मेट को आप अच्छे से फिल कर लीजिए, योर नेम, क्वालिफिकेशंस, ऑल द डिटेल्स एंड एड्रेस। और फिल करने के बाद आपको इस मेल पे आपको इस डेट से पहले 22 तारीख यानी कल शाम 5 बजे से पहले आपको इस मेल पे आपको भेज देना है। साइन शुड बी सबमिटेड टू द अंडरसाइंड, साइन करने के बाद आपको भेज देना है इस मेल पे। ओके, और किसी भी मेथड से, ऑफलाइन या किसी भी मेथड से ये लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो आपको इसके साथ ये सब चीज़ें भी अटैच करनी है, लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इक्विवेलेंसी, लिस्ट ऑफ द आर्टिकल, ये सारी चीज़ें आपको इन 1 PDF में करके आपको भेज देना है। उन्होंने बोला है सिंगल PDF में होनी चाहिए सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें आपको करके एक ही PDF में भेज देना है। और ईमेल में आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट में होता है वहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्टैक्ट, और आप जिस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और उस ईमेल में भेज देना है। सो यहाँ पर डेट देख लेते हैं हम लोग। तो ये 15/5 को, ये 15 मई को एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है, और ये लास्ट डेट है 22 मई तक 5 बजे शाम तक है। और आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डेट ऑफ इन्विटेशन द इंटरव्यू शेड्यूल एलिजिबल कैंडिडेट, या आपको इसका 25 का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो कौन कौन से लड़के सेलेक्ट हुए हैं फॉर द इंटरव्यू राउंड आपको आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि 3 दिन में आपका ये रिजल्ट भी आ रहा है। सो आपको ये फिल कर देना चाहिए, बिकॉज कि इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं है। तो आप इसे अभी फिल कर दें तो ज़्यादा बेटर है। आपको बस वो प्रिंट आउट कराना होगा, और प्रिंट आउट कराकर आपको उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके बस आपको ईमेल कर देना है, डेट्स ऑल। और यहाँ पर इन्होंने, हाँ, अगर जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आपको एक कैरी करना है फ़ोटो ID कार्ड फॉर द पर्सनल वेरिफिकेशन। ओके, सो यहाँ पर आपको ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक हायर एजुकेशन या नेट स्लेट, या फिर कोई भी PSU या कुछ भी जो चैनल्स पे हमारे हैं वीडियोस, उसमें से किसी भी वीडियो में आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने का। और हम लोग 1000 का बहुत ही क्लोज हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट इज, एंड थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।